Good morning, friends. Welcome to the session. Start of a fresh week. Just give me a minute here. Just now I realized I forgot to attach my monitor. Just a minute and we are good to go live. Sometimes small things you just think it's all done, but last moment you realize it was not there. So yeah, now we are all set. Good morning, everybody, and welcome to the session. So I'll also start the session on my mobile to see that everything is fine. Okay, Harpreet has given me a yes. So I assume everything is fine. Anybody else? So we can wait for at least few seconds before we start. Yeah, Harpreet is there. Shabaki Kamlesh has joined. I'll just wait for a few of our regulars to join. So I'll just share my screen. मैं अपनी screen share करता हूँ. And I guess now we are not going to wait. Let's go live. So before we start, I'll read out the disclaimer. The disclaimer says this is for educational and informational purposes only and it does not constitute financial advice. So 24 तारीख के दिन start of a fresh week and also remember tomorrow कल के दिन जो है वो monthly expiry भी है. So these two things, the expiry you have to keep in mind because काफी sideways market में expiry हो रही है. So can we see a spike up? Because we are still trading Nifty में 200 दिन के exponential के नीचे हम trade कर रहे हैं. So let's see what the data points आज सवेरे बता रहे हमें. So we'll start. So I think yeah, now traders are joining. As always, देखिए expiry का एक weightage रहेगा. But we don't violate our plan. अगर हम रोज एक चीज देखते हैं तो we should not discard it. So Wall Street futures steady after weekly losses. Nvidia का result है, Jackson Hole का focus है कुछ. So more or less US is green. बहुत कुछ ज़्यादा भी ऊपर नहीं है, but at the same time it's not negative. और हम यहाँ पे यही देखते हैं कि कहीं ग्लोबल मार्केट्स में कोई जोर से अपसाइड या डाउनसाइड नहीं है. यूरोप इज ऑल्सो फ्लैट. बोवेस्पा मेटल 3000 पॉइंट ऊपर है. ध्यान रखो मेटल स्टॉक्स पे आज. निकाय 180 पॉइंट्स को हम फ्लैट मानेंगे. सो स्टार्ट मार्केट्स आर मोर और लेस फ्लैट which does suggest that gift nifty might be up 50 to 60 points. That's what the feel is. देख लेते एक बार. So if I go to futures, if I go to gift nifty में अगर मैं जाता हूँ तो गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं 50-70 पॉइंट प्लस होना चाहिए. सो इफ आई गो टू डेली, या गिफ्ट निफ्टी इज अप 75 पॉइंट्स, सो व्हिच वाज क्वाइट प्रेडिक्टेबल इन द सेंस दैट देखिए अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी अफरा तफरी नहीं है तो एक सॉफ्ट ओपनिंग, मैं अगर एक स्ट्राइक का ओपन है 50 पॉइंट का उसको सॉफ्ट ओपन मानता हूँ. 2 स्ट्राइक का ओपन है अप और डाउन तो इसको स्ट्रॉन्ग या वीक मानता हूँ. कभी भी देखिए अगर आप ट्रेडर हो, मार्केट इज ऑप्शंस ड्रिवन, स्ट्राइक इंटरवल के हिसाब से आप अपसाइड या डाउनसाइड मेजर करिए. डज इट मेक सेंस एवरीबॉडी? बस मुझे यहाँ पे एक ही चीज देखना है, क्या गिफ्ट निफ्टी ने 200 एक्सपोनेंशियल निकाला है? समटाइम्स क्या होता है, हमें गिफ्ट निफ्टी से एक अर्ली इंडिकेशन मिल जाता है. सो गिफ्ट निफ्टी में अगर 200 एक्सपोनेंशियल में देखता हूं तो नहीं, गिफ्ट निफ्टी वही हाई पे खड़ा. सो विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि निफ्टी का भी आज ओपन वाइट बी रेजिस्टेंस एट द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. देखिए ये जब बड़ी एवरेजेस है ना, व्हेन दे रन अक्रॉस योर प्राइस चार्ट्स इन द करंट like trading where prices are trading around the average, you have to keep a note of it. See exactly today's gift nifty high is the 200-day exponential moving average. I'll just thicken the line बिकॉज ये हम इतने दिन से फॉलो करते हैं ना. देखिए इसका निकलना एक मार्केट का कहीं ना कहीं अपस्विंग के बारे में बताना भी रहता है. यहाँ पे भी एग्जैक्ट टच किया बट इट डिड नॉट क्रॉस. यहाँ पे इसने एक्सपोनेंशियल टच किया, एक दिन के लिए क्रॉस भी किया था. सो लेट्स सी वेदर विल नाउ सी दिस पार्ट ऑफ द मूव और दिस पार्ट. माय वोट इज फॉर दिस. या IB मैथमेटिक्स, गुड मॉर्निंग. Yeah, now we have all our regular joining. See, whenever those important averages run across your price chart, you have to take a note of it.
आज की तारीख में ओपन में मार्केट ये बता रहा है कि 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो एक पिवट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी में हमने अभी देख लिया, अभी जाके हम निफ्टी में देखते हैं। बिफोर वी गो दैट विल डू अ हाइजीन चेक। एक बार हम क्रूड देख लेते हैं। फोकस एक्सपायरी का ही रखिए। देखिए क्रूड मोरलेस अभी तक एक हैमर बना है, तो क्रूड में देखिए कोई नरमी नहीं आ रही है, बट ये गैप का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। So no big upside or a downside from crude and the current levels of crude में एक ये चैनल बन रहा है। आफ्टर दैट इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स अभी काफी नीचे है, जिसको हम लो वोलेटाइल रिजिम बोलते हैं, अभी भी ये रेंज में ही है, आप देख लो। सो विच सेज दैट नीचे में जब मार्केट जाता है ना, तो लो वोलेटाइल रिजिम में क्या है, क्रूड या वी आर चेकिंग क्रूड, देयर इज नो बिग इवेंट गुरखा क्लब 6073 and VIX is very interesting at this point because VIX is in a range. देखिए VIX अगर रेंज में भी रहेगा, वी डोंट वांट एनी अपसाइड और डाउनसाइड ब्रेक ऑफ दिस रेंज इमीडिएटली कि एक बड़ा स्विंग आ सके मार्केट में। एक लो वोलेटाइल रिजिम मानेंगे 10 का, बिकॉज अगर मैं मंथली चार्ट पे चला जाऊं, देखिए विक्स का एक नीचे का एक स्तर रहता है विच इज समवेयर अराउंड दिस लेवल 9। तो विक्स वोलेटिलिटी एकदम एक्सट्रीम लो पे है अभी। आई रिपीट, volatility is at an extreme low. Just take a note of it. Volatility expansion should happen. Volatility expansion एक दिन में नहीं रहता, it's a directional and it gives us a decent enough indication. जो एक दिन में होता है ना, उसको spikes बोलते हैं, उसको volatility नहीं बोलेंगे। ये जो volatility है option driven volatility है। इंडिया विक्स इज एट अ लो। इसके बाद हम निफ्टी पे जाते हैं। आई रिपीट, 200 दिन का एक्सपोनेंशियल आप निफ्टी में प्लॉट करके रखो। So the first thing is I will plot a simple line over here, and this is my red line is a 200-day exponential moving average, right? और मार्केट में कहीं ना कहीं देर इज अ कंजेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल एंड द 50-डे मूविंग एवरेज। मैं 50 दिन का भी प्लॉट करता हूँ, तो हमें ये दो लेवल के बीच में मुझे लग रहा एक मार्केट रहेगा। नाउ आर यू विजिबल? ऊपर में 50, सॉरी ऊपर में 200 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड नीचे में 50-डे मूविंग। कैन यू सी क्लियरली मार्केट में एक कंजेशन आ गया? दिस इज कॉल्ड प्राइस कंजेशन। प्रीवियसली भी आप जाके देख लो, समवेयर अराउंड हियर जब एवरेजेस के बीच में रहता, दिस इज प्राइस कंजेशन। तो लग रहा है थोड़ा एक रेंज में प्राइस निकालेगा। आफ्टर दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। अभी एवरेज का काम हो गया, नाउ लेट्स रिमूव इट। डोंट अननेसेसरली कीप स्टडीज ऑन योर प्राइस चार्ट्स। इफ समथिंग इज डिसीजन मेकिंग, इनकॉर्पोरेट इट, इफ नॉट डिस्कार्ड इट। So now once I go to the 60 minutes time frame, my exponential is somewhere here, and this is where एक हाई, दो हाई, तीन हाई, चार हाई, there are 4 highs around here. This logically becomes my resistance in which मैं पूरा 200 दिन का एवरेज को ले लेता हूँ। Is it making sense everybody? अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, तो एटलीस्ट मैंने अपना एक ऊपर का स्तर नक्की किया। इफ इट ब्रेक्स दिस, तो ब्रेकआउट मान सकते हो फॉर अनदर 50 पॉइंट्स टिल दिस हाई। आई एम नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट। मार्केट है, फिर देख के काम करो। और 50 दिन का एवरेज एग्जैक्टली 2 दिन पहले का लो है, और वहां से मार्केट रुका है, तो इसको हम सपोर्ट ले लेंगे। एक्सट्रीम लेवल्स पे सपोर्ट अगर देखो, फिर मुझे यहां तक कोई नहीं दिख रहा। तो जो हम मॉर्निंग में एक रेंज बनाते हैं, सो दिस इज माय mapping the markets in the morning. Is it sounding logical, friends, on a 60 minutes? If you don't agree, you can say I disagree. It's absolutely fine. Nobody is an expert here out there. जो expert बोलते हैं, मैं किसी को expert नहीं मानता हूँ। See, when market opens at 9:15, we are all freshers in the market. Those set of freshers survive who have a plan, rules, and manage the risk. कोई expert नहीं है यहाँ पे। ये हो गया हमारा 15 मिनट्स। अभी हम 15 पे चलते। तो मोरलेस मुझे ये सेटअप आज के लिए अप्रोप्रिएट लग रहा है।
नाउ अगर ये देखिए, ये कंजेशन में आपको जो पैटर्न बनाना बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, फॉलिंग वेज बन सकता है, राइट? तो ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारे जब हाइज रहते हैं ना, तो इसको आप एक बार लाइन चार्ट पे कर लीजिए। लाइन चार्ट करने से क्या होगा, द इंट्राडे स्पाइक्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो देन एक ब्रेकआउट क्लीन दिखता है, जो कि 24,262 है। वापस से मैं आ जाता हूँ। नाउ यू गॉट इट। No, 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 Venkat, nobody is an expert out there. Good morning, Aditya. कोई एक्सपर्ट नहीं है. We are all freshers at 9:15 when market opens. So this is how my Nifty is positioned today. This part of the congestion, देखिए ये गैप में एक बार तो सेलिंग आया, रुक गया. आज लग रहा गैप अप के ऊपर ही मार्केट खुलेगा. So now all you can do is you can mark a small little channel here. वेदर यू मार्क अ चैनल और अ ट्राइंगल, देखते मुझे तो लग रहा, देखिए ये ब्रेकआउट है 24462. देखिए एक्सपायरी में मार्केट कभी हैवी हो सकता है. तो ये जो पूरा कंजेशन है ना, दिस हैज टेकन अ शेप ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल. Is it looking like a triangle on a 15 minutes? If yes, give me a yes. I'll wait. Yeah, Aditya, I saw, but I was too tied up. I'll reply to it. Absolutely, Anand. Intra gap up ATR line should be there. So this is how Nifty is positioned, and you have to act accordingly. See, when market में ऐसा congestion होता है ना, there is a system which we should follow is what I call a multiple moving average trading system. So in me you have to plot either exponential or simple set of 5 averages. I'll just give you the inputs: 3, 5, 8, 13 and 20. इससे क्या होता है ना, अगर ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स अगर एवरेज क्रॉसओवर ऐसा आता है ना विद अ टाइट नॉट, दिस सजेस्ट दैट मोमेंटम इज नाउ ऑन द अपसाइड. तो आपको मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का आज ध्यान रखना है. और अगर निफ्टी में ऑप्शन डेटा देखते अहेड ऑफ द मंथली एक्सपायरी, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट है 19.28 करोड़, कॉल में 17.80 करोड़, 17.80 करोड़. तो कहीं ना कहीं मार्केट इज इन अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम विद अ स्लाइटली पॉजिटिव हिंट इन द सेंस पुट का ओआई बढ़ा हुआ है. और देखिए इमीडिएटली फाइट है 24,300 और 24,200 के बीच में. आप बड़े बड़े टावर्स देख लो जो कि ओआई डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेस्ड करंट प्राइस. One side it's likely to break, and OI distribution kafi is not showing anything negative in the markets right now. So that was Nifty. I think we are all set with our demand supply, with our patterns, with our 200-day exponential moving average. All will come into play today. After this, let's go to Bank Nifty. देखिए बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इट्स शोइंग मोर स्ट्रेंथ देन निफ्टी. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दे चुका है. वंस इट हैपेंस यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ इट. और बैंक निफ्टी में जो हम एवरेज फॉलो कर रहे हैं वो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है. मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं व्हाई यू आर टॉगलिंग बिटवीन सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल. इज वेरी सिंपल, विच एवर इज द क्लोज टू द करंट प्राइस वी टेक दैट एज अ रेफरेंस पॉइंट. So Bank Nifty Friday support was the 200-day moving average. So Bank Nifty is now positioned more positively compared to Nifty. तो मैंने 200 दिन के एवरेज पे एक लाइन ड्रॉप कर दिया. After that, I go to my 60 minutes time frame. Okay, before I interrupt, see this is our Trading Titans Substack channel. If you have not subscribed, it's all part of building a trading titan community. If you don't subscribe and read, then who will do? We have a small group, but let's make it bigger. So every week I write an extensive weekly note taking into account what's happening in India and global macro, including the Dow Jones, S&P, gold, crude, and I select stocks. So those who have not read or subscribed, they can read the technical note. Make sure, I would love everybody to read it because it takes me close to 4 to 6 hours to write this note on all the indices. And as I said, we base our next 5 days based on this note. Got it, everybody? So make sure you go through it. I've given you the link in the chat. Kamlesh, I think you are not Shabaki, IB Mathematics, Shweta.
मैं आपका नाम नहीं देख रहा हूँ, यू आर गोइंग थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू इट, बिकॉज यू सी दिस इज पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग, पार्ट ऑफ योर प्लानिंग. एक बार झलक देख लो, बाहर नहीं करना अपने को. देन वी हैव दिस मॉर्निंग सेशन इन विच we take those baby steps along with the overall view. Yeah, coming to bank nifty. So ये 200 दिन का एवरेज है, यहाँ पे कल का लो है, day before yesterday's low and closes there. So this becomes my demand support, जो बोलना श्रद्धा अनुसार बोल लो, support for the day. After that there is a big gap over here, right? और देखिए कहीं ना कहीं मैं फिर से एक बार लाइन चार्ट पे जाता हूं टू सी क्लीन ब्रेकआउट्स. ये हाई है. बहुत बार क्या कैंडल्स पे स्पाइक्स बहुत ज्यादा दिखते एक कंजेशन जोन में, तो दैट्स द ओनली टाइम व्हेन आई चेंज इट टू लाइन चार्ट. लाइन और इसमें दोनों सेम है, सो इट्स नॉट मेकिंग मच ऑफ अ सेंस. और बैंक निफ्टी में ये गैप है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ये गैप से भाव घूमा है, तो आई विल कीप इट दिस वे 57,900. And if it breaks this, then during the day you have to figure out the higher levels. इसके बाद मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ. जैसे निफ्टी में हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखा था, सेम वे बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक कॉम्पैक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल है on a 15 minutes time frame charts. So this is it, slanting line, and if I join the lows, yes, इसको हम descending triangle बोलते हैं. So which means that morning में एक spike expected है on the upside. So will it take to 57,900? Then you have to rely on fading the gaps, your VWAP and VWAP. देखिए तीन चीज आज आपको काम में आने वाली है एज अ डे ट्रेडर. Venkat says, sir, this is very good journal touching all the sectors and indices. Yes. Three things you have to keep in mind today. Opening range, ORB लिख देता हूँ. ORB 5-15 based on your style of trading, you can apply. Second is I would plot the VWAP. Fine. Third is either you have, देखिए दो चीज हो सकती है, either a ORB or a gap fade. गैप फेड का मतलब है स्ट्रॉन्ग खुल के एक बार थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है. So my thing is, as the market progresses, these are the three technical studies which you have to keep in mind and act accordingly. पहले ORB के लिए वेट करो VWAP के साथ. एक बार ORB आ गया, that means एक बार ऊपर के स्तर टेस्ट करने जाएगा. अगर ORB नहीं आ रहा तो गैप पे फेड हो जाएगा. देखिए हम देख लेते डे बिफोर यस्टरडे, इसको ORB बोलते. 15 मिनट का हाई तोड़ा, कहीं ना कहीं एक स्ट्राइक 100 पॉइंट दे के जाता है. गॉट इट एवरीबॉडी? इसको ORB बोलते हैं. या इट्स अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, धीरज. So I think we are well planned, we are well prepared. We have our Substack weekly note. Kindly confirm it to me if you have all subscribed. We have close to 40 to 60 participants. I want yes from you all, because it's not only the weekly notes. We have tips and tricks, and lots is coming towards building a community of trading titan, which is like-minded traders coming together. Revati says yes, okay. Kastur, yes. Reddit, IB Mathematics, yes. Aditya, yep. Yeah, Aditya, I'll go through your WhatsApp. I just saw it. Give me some time. Okay, but still only 5 out of 50, which is not a good number. Shweta, yes. Okay. So that's all from my side, friends. Today we are prepared. और तीन चीज रखो. और देखिए जो मैंने एवरेज का आपको बोला आज, फोर्थ वन, इस पे आप ध्यान दो. प्लॉट 3, 5, 8, 13 and 20 पीरियड एवरेज एक्सपोनेंशियल डाल लो. एक बार मार्केट कंसोलिडेशन या कंजेशन में चला जाता ना, तो एवरेज क्रॉसओवर दिखाता कि ये कंजेशन इट हैज रीच्ड ऑन द अपसाइड. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody. We'll again meet in the evening at 3:45. And please post your comment once I end the session. Venkat, Pradeep, IB Mathematics, Urmila, don't write good, bad, and थोड़ा डिटेलिंग करो कि मैं भी पढ़ूँ तो मुझे लगे कि मैं और कैसे improve कर सकते हैं ये sessions. So thanks, friends. Have a nice day.